UX in general, so it's like when you enter into the industry, you will see के UX में लोग किसी भी discipline से, किसी भी background से आ रहे होते हैं actually, and that's really exciting. के I have personally mentored students from law, from MBA, from BCom, from people who have been working in like banks and finance sectors, and then they wanted to just switch. So it will be good. Also, yeah, matlab I'm not gonna force it, but if you people are comfortable, तो अपनी शक्लें दिखा सकते हो. because it's like ये बहुत weird होता है कि कि मैं ऐसे एक अकेले कमरे में बैठ करके मैं बोलता जा रहा हूँ. I can see people, but like I can see the thumbnails, right? I can see the A and B's, but I cannot. तो जिसे भी मतलब जो भी comfortable हो वो अगर अपना कैमरा ऑन कर लेंगे तो it will be fun to talk actually. क्योंकि the way that I have planned this session is not के पहले initially I was like कि चलो एक presentation बनाएंगे, I'll screen share presentation में slide 1 2 3 करते जाएंगे and then the session will be over. And then I was like I dropped that idea completely because I went back to, so there is a group that I run, it has somewhere around 500 students and it's like a free group where people just come and talk about design. तो हम ऐसे बात कर रहे होते हैं, sessions कर रहे होते हैं. तो उधर पे मैंने जाकर के पूछा उन लोगों से कि इफ यू वर अ कॉलेज स्टूडेंट, राइट, व्हाट काइंड ऑफ गाइडेंस यू वुड हैव एक्सपेक्टेड, राइट, एंड व्हाट आर द थिंग्स दैट आई कैन इंक्लूड इन माय प्रेजेंटेशन. तो पीपल वर लाइक के information we are still getting, like information we can still get to like via googling, but people are not getting access to a person who they can talk to. That is why I decided कि I'll just make this session. There will be things that I have to tell you, so I have a structure, but there will be no presentation. I'll probably talk for like 5-10 minutes in which I'll give you a lot of the necessary info, and उसके बाद में we'll take in questions. कुछ भी कितना भी random doubt हो आपको, कितना भी random doubt हो, right, you guys can ask me and I'll try to answer that, and then we'll try to lead the conversation there, right? Because I think वो आपको YouTube पे नहीं मिल पाएगा. You'll not be able to talk to someone, right? So then let's make it so it's like अगर if you're interested in UI UX, right, and कोई भी चीज आपके मन में आ रही कि यार कि ये हो पाएगा या नहीं, राइट, या किसी भी तरह का डाउट हो, तो वो आप ऑडियो पे आप चाहो तो मेरे से पूछ सकते हो, या फिर यू कैन जस्ट पोस्ट इट इन द चैट बॉक्स. ठीक है, ओके. सो अभी देयर आर 36 पीपल. मैं फिर से बता देता हूँ. सो आप लोग में से आप लोग अपनी अपनी ब्रांचेस ड्रॉप कर दो कि आप किस किस डिपार्टमेंट से हो. तो चैट बॉक्स में आप अपने अपने डिपार्टमेंट्स एक बार ड्रॉप कर दो. एंड या इफ यू कैन मेंशन द ईयर आल्सो तो वो भी और अच्छा होगा. बेसिकली रजत, वी आर अ कॉलेज जिसमें सिर्फ और सिर्फ इंजीनियरिंग ही है. या सिर्फ और सिर्फ. तो कोई और तो आई गेस डिपार्टमेंट ओके बाहर से ज्वाइन करे दैट डिपार्टमेंट एज इन सो सीएससी आईटी के अलावा यू गाइस विल बी हैविंग, राइट, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल. वी डू हैव पीपल फ्रॉम दैट डिपार्टमेंट. या perfect. Okay, so there is one AIML first year. What is that? AIML is it a department? Specialization of CSE. Oh, okay. AI and machine learning. Yeah, okay. That's cool. And how many specializations in total are there? So there is AIML and CSI, IT, IoT. Okay. Two. Okay. And so it's like ऐसा है क्या कि दो like उनकी classes अलग-अलग रही होती हैं? Yeah. Permanently? Yeah. So basically, what happens कि first or second year में there is कुछ सब्जेक्ट सेम होते हैं, बट आफ्टर इन थर्ड ईयर देयर आर मेनी सब्जेक्ट्स जो काफी डिफरेंट हो जाते हैं. Okay, that's interesting. I didn't know like that's also happening like BTech level पे there are, because AIML it's interesting, like yeah there is a lot to learn in AIML, but होने लगा है, right, people are already specializing in AIML right from the BTech. That is interesting. ठीक है. Okay. तो एक फॉर्मेलिटी कर लेते हैं स्टार्ट. या आई गेस 7:05 तो स्टार्ट कर लेते हैं. या तो जस्ट अ सेकंड. Okay, so hey everyone, my name is Isha Dabas and I'm your GDSC DCE lead for the current tenure 2022-2023.
I'm really excited that you all are here on a Sunday evening and would like to welcome you all to today's session that is on why you should be a UX designer in 2023, the complete roadmap. So, as we conducted the orientation session, we were brought to notice that many of you are really interested in UI UX. And just to give you all an overview and understanding about UI UX, we planned this session. With this, before starting with the session, I would like to tell you all some rules and regulations that needs to be followed. That you can switch on your cameras and mics, but please be in a decent condition. Other than that, it would be preferable if you use chat box in between the session while the speaker is talking and do not interrupt the session. And it is mandatory to maintain the decorum and discipline of the community. With this, I would like to introduce you all to our speaker, that is Rajat Patel. And hi, Rajat. I would like Hello. to give you all a little intro about him. That he is basically working as a senior UI UX designer at Airtel. He has 6+ years of experience in the domain, and he also enjoys mentoring UI UX designing domain students. So yeah, welcome Rajat. Over to you. Yes, thank you. Thank you. Okay, I'll give a even a more like slightly longer description about me so that you guys can connect. Okay. So first thing is that I am also an engineer, but I did my BTech in biotechnology in 2016 from NIT Durgapur, West Bengal. When I entered college, I actually also wanted to switch to CSE, but somehow that didn't happen. But I was very interested in like technology. And also, by the way, when I entered college in 2010, nobody knew about UI UX. Like UI UX was not at all a popular term. In fact, people used to call it web design at the time because the tools were not that popular, right? The way we are doing UI UX design has changed a lot in the last 10 years. So, us वक्त में we used to call it web design. So I entered college in 2016, and Okay, guys, just a sec. I guess there is some technical issue at Raj's side. He will be connecting with us in another second. With that, I would request you all to drop your questions which you have regarding UI UX or anything else. You can drop it in the chat box. You have any questions regarding GDSC or UI UX or whatever. We will be really happy to answer you. So it would be great if you all can interact with me. I would not mind you people switching on your cameras or unmuting yourself. What is exactly UI UX? So, trust me, guys, I'm not a UI UX expert, but I would really like to learn. That's why even I'm really interested and I'm sitting over here. Uh, let's hope that Rajat joins in other seconds and then we can continue the session. That particular question, that what is exactly UI UX, that will be answered by Rajat. Moving on, how do we join GDSC club? So basically, to join GDSC, you will have to um, fill out a form. But currently, that my core team has been already selected before you people before the first year joined. So it is like that now. You will be releasing the volunteers form in the mid of by the end of November, in the starting of December. So by that form, you can join us as the volunteer, but the core team has been already formed before the first year joining. So with yeah, Rajat is back. Yeah, hi Rajat. yeah, sorry, electricity issue. Yeah, no problem. Wi-Fi flickered. Okay, yeah. So I was saying by the end of 2016, UI UX was actually like a major discipline. It became recognized as a standalone discipline, right? And for I think उसके बाद से it has only been growing. So mm, I also did, by the way, since a lot of you are from CSEIT, you would know. Okay, I also have done competitive programming in college. So Java, C++, Python, I have also done. It's just that I think by the in the middle of the third year, I somehow got to know about this, and I wanted to actually do an internship because I wanted money. Like that is exactly how I became a UX designer. I used to design with my college people for like the same thing,
कॉलेज में जो क्लब्स वगैरह के जो मतलब मेंबर्स हैं उनके साथ में मैं कभी पोस्टर्स डिजाइन कर रहा हूँ एंड ऑल दैट, राइट? दैट्स एग्जैक्टली हाउ वी गेट स्टार्टेड इन डिजाइन. And then somehow I got introduced कि यार okay, we can do work from home internships in college and we can earn some money. That was my motivation to actually start exploring this, and I started as a graphic designer, and then I like started learning by myself. I read probably 50-60 books in one semester in UI UX. I got crazy. So and then I actually like I practiced, and somehow I got started into the UX designer. Fast forward 6 years, here I am today, working in Airtel as a UX designer, and primarily my specialization is design systems. I hope if we get time, we'll talk about okay, what is a design system. Okay, just a reminder, okay, you guys please drop in your department name in the comments, right? So सैलरी, यार सैलरी भी बात, सैलरी मैं इंस्टाग्राम में डीएम कर देना, मैं बता दूंगा. आई एम वेरी ओके टॉकिंग अबाउट माई सैलरी. आई ड्रॉप माई इंस्टाग्राम हियर. जिसको भी मेरी सैलरी जाननी है, आई गिव यू, आई सेंड माई सैलरी स्टेटमेंट हियर. मैंने इंस्टाग्राम ड्रॉप कर दिया, इधर पे डीएम करो, आई सेंड यू माई सैलरी अभी अभी के अभी. ठीक है. And by the way, salary reminds me, UI UX design pays a lot. Like some of my students have gotten more placements than like software developers. Okay. Also, why I am in this session, I have been mentoring students for last 2 years. It started by chance. One girl who was my first student, she randomly texted me on LinkedIn one day. She sent me a prototype link. She was like, sir, I have made okay, yeah, LinkedIn, yes. Isha, you share my LinkedIn there. So she Just texted me a link of a design file. She was like, sir, can you give me some feedback? I'm trying to switch to UI UX design, and could you give me some feedback on this? And now, fortunately, she was the first one who actually showed me something before asking me to help her. And that is why I, like, I decided to help her. Okay. And then that's how I started. And in last 1 year, I have personally mentored about 50 plus students. जिनमें से some are still in colleges, around 10 plus students have been placed. And since you guys would like salary numbers, my student who got the highest salary package was uh, 17 LPA right out of college, right? So he graduated in this July, and July mein he joined in a startup named Refine in Bangalore at a salary of 17 LPA, which is probably one of the highest salaries that you can get in India as a designer. Like his base salary is 12 LPA, which is around the highest, even if you're getting like 20 LPA in Amazon and all. Like Amazon maybe 16 LPA base mil raha hota, and your package is 30 LPA, right? So there is a lot of money in design, right? ठीक है. I think इससे पहले कि हम आगे बढ़े, yeah, okay, somebody also asked me, right, कि what is UX design? ठीक है. Yeah, that's a good way to ask questions. I would say कि keep dropping your questions like that. ठीक है. पहले तो मैं बता देता हूँ कि UX design होता क्या है. So UI and UX का full form होता है user interface and user experience, right? What happens is जैसे जैसे करके technology evolve हो रही थी, we humans were interacting with technology, right? And to interact with any system, you need an interface. जैसे कि there is this mobile phone, right? Now इसके अंदर में ढेर सारी apps है, right? It has a processor, it has a battery, it has the capacity to do a lot of the things, right? But what do I need? Like there are some things that I need to interact with it, right? First thing, I need a power button, right? I need a power button so that I can switch it up, right? Switch it on. That is an interface. Then I have a lock button. I have a charging port, right? All of these parts are interface. I'm interacting with this phone via those interfaces. There is a touch screen, right? Before touchscreen came into action, there used to be keypads, right? There used to be a screen which used to display items. So user interface में जो interface वाला part है, right? Anything, any button, any display, right? Any item that lets you interact with the system is called interface. जब आप दरवाजा खोलने जा रहे होते हो, तो जो आप हैंडल पकड़ के दरवाजा खोलते हो, right? That is also part of the interface that you have, which allows you to interact with that door, right? आपको लॉक खोलना है, you can hold the lock, you have a key. All of these are part of the interface, right? Primarily UI UX में आजकल लोग वेब या डिजिटल इंटरफेसेस के बारे में ज्यादा बात कर रहे होते हैं. जब हम डिजिटल चीजों के बारे में बात कर रहे हैं, when you're talking about an app or a website, right? So how it looks
that becomes the interface, जिसमें you have buttons, right? You have input fields, right? Which you can press, which you can type on. Then there are texts and images that you see, right? So that is system's way of interacting you. That is, the system is giving you information, and if you want to interact with the system, you want to share your input, right? Then you have buttons and input fields and a lot of the elements. So that is user interface. Now, what is your user experience? User experience is so when you interact with the system, right? Usually you have a goal. कि यार मेरे को let's see, मेरे को Google Pay करना है, right? I shopped and I have to make the payment. I need to Google Pay. ठीक है. Now, before Google Pay came into action, we had cards, right? Now, उससे पहले we didn't have cards. We used to use only cash, right? Cash we still use today. Now, every interaction has a certain bit of emotion that gets invoked in you once you complete that task. जैसे कि कुछ लोगों को कैश में पेमेंट करके बहुत अच्छा लगता है, राइट? तो जो कैश का इंटरफेस है, and you as a user, once you have interacted with it, you feel happy कि यार 200 की मेरे पास में नोट थी, मैंने 2000 की नोट दी उसको, I feel proud यार कि बहुत अच्छा लगा मुझे, right? Now that emotion that you get after the transaction is done, and in fact even while the transaction is happening, आपको लग रहा है कि मैंने 100 रुपए की चीज के लिए ना इसको 2000 का नोट दिया, अभी मेरे को 3 5 500 रुपए की नोटें देकर, राइट? यू फील प्राउड कि ओके, like, so that emotion, and you can imagine any kind of interaction, so that emotion that gets invoked in you while you're going through that interaction, and once that interaction is done, that is the user experience part. You experienced it. गूगल पे करना, अगर आज हमें जब यूपीआई टेक्नोलॉजी की वजह से जब हम क्विकली पेमेंट कर देते हैं, राइट? वी हैव दैट ईज, also we have that satisfaction here. I don't need to carry my wallet, I don't need to carry my card, right? I still can do literally anything. I can just carry my phone and I can travel the entire world. टिकट्स मैं यहाँ पर बुक कर दूंगा, राइट? कपड़े मैं यहाँ से खरीद सकता हूँ, खाने मैं यहाँ से ऑर्डर कर सकता हूँ, मैं कैब्स यहाँ से ऑर्डर कर सकता हूँ, राइट? नाउ, and so that feeling, right, ki the comfort that it allows you, mobile phone, the comfort that mobile phone allows you, that is the experience part. You're experiencing it on a certain degree. That is what we design. We plan it, and we somehow, there are strategies, there are frameworks, we design it, and we basically push it to users, and users are able to feel it. So that is UX. If that is clear, give me a yes in the chat box. And if that is, if there is any question regarding that, you guys can post that also. Chalo, okay, I'm happy. ठीक है. So let's see. Now UI UX क्या होता है हमें ये पता चल गया, right? And literally आज के सेशन के बाद में जब भी आप जा रहे होगे ना, मतलब आप किसी भी चीज के साथ में इंटरेक्ट कर रहे होगे, try to look into, like, try to observe that system or object. जैसे कि मेरे पास में एक छोटा सा ट्राइपॉड पड़ा है, राइट? आई बॉट दिस वेरी रिसेंटली. Why? I did not need this. I just found it really interesting कि okay, they were able to fit in so much of the, technology in this. It has so many hinges. I was like, okay, this is a system, there is one hinge here, this goes, like this expands. I was like, okay, this literally got me so interested. I was like, chalo, I need to buy this. Now I can understand कि okay, somebody literally, when I had, you have this handle, right? ये plain भी हो सकता था, but somebody took the attention कि okay, you, when you're gripping it, right, there is gaps between your fingers, that gap, so they can create similar ups and downs in this. That is consciously designed, right? It has been observed, people saw कि okay, this is actually a problem, it, and adding this little touch can give it a better grip, which will in turn give you a better experience while you're handling it, right? So that, like, that is one way you can start observing good user experience in your day-to-day life, and you'll find many examples, by the way. Okay, so how long does it take for you to get a good level in design psychology? For that, you have to define what is a good level for you, right? A good level might mean different thing for you, and it might mean different thing for me, right? So for me, I would say it, in general, अभी your, like, the goal that you guys have is कि जॉब लगेगी या नहीं मेरी, राइट? मेरे को डिजाइन साइकोलॉजी में एक्सपर्ट नहीं बनना है, मुझे जानना है कि मेरे को इतना सिखा दो कि मेरी जॉब लग जाए, उसके बाद में आई विल कीप लर्निंग फॉर लाइफ, राइट? आई वुड से
1 year is the max amount of time that you need to get enough understanding the field jahan par you can get placed. 1 year, in 1 year you can get placed as a full-time designer. With just 6 months of work, I would say you can start getting internships from like 10,000, 15,000, 25,000. Like there are internships that pay you 30, 35,000 rupees a month in design, especially companies like Microsoft and all. Like they pay you somewhere around 1.2, 1.3 lakh rupees for a design internship for 3 months, which is somewhere around 40,000 rupees. So, and that you can reach if you actually put in hard work, you can reach there in probably at max 6 months. Somebody very intelligent might reach there in 3 months also, but that depends on the amount of work that they're able to put in. ठीक है. Okay, so I'll just give you one very small brief of how is it actually done in the industry, right? How UX हो कैसे रहा होता है, ये कैसे डिजाइन कर लेते हैं. यूजुअली क्या होता है कि हम सभी के पास में एज अ डिजाइनर हमारे पास में either there will be a problem statement, right? There will be a problem that we have to solve. या फिर wait, I'll just yeah. So there'll either be a problem that we have to solve और हमें डेटा एनालिटिक्स हमने लगा रखी हो तो हमें कुछ इंसाइट मिल जाती है उससे कि यार हर संडे को रात को 8 से 12 बजे के बीच में लोग अचानक से क्यों आ जाते हैं हमारी वेबसाइट पे, राइट? नाउ दैट इज एन इंसाइट. We don't know what it means, right? But it might mean something because if you more users means more potential for business. तो अब ये एक इंसाइट हो गई. तो दो तरीके, पहला कि आपको कोई प्रॉब्लम मिली या तो ऐसे कि प्रॉब्लम ऐसे कि सो लोग ना हमारे पेज में चेक मतलब हमारे वेबसाइट पे कुछ चीजें खरीदने आते हैं, फाइनल स्टेज तक जाते हैं बट पेमेंट नहीं करते, राइट? दैट इज लिटरली ई कॉमर्स इंडस्ट्री की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है मेरे हिसाब से कि लोग हम सब विंडो शॉपिंग कर रहे होते हैं, फील लेने के लिए हम जाते हैं, लास्ट पेज तक जाते हैं और हम पेमेंट नहीं करते हैं क्योंकि हमारा मन नहीं होता है या फिर कभी कभार डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं किसी चीज पर, फिर सोचते हैं कि यार बाद में कर देंगे, राइट? हाफ हार्टेडली हमने खरीदना शुरू तो कर दिया था, लास्ट में जाकर के लग रहा है यार थोड़ा महंगा हो गया, हमने छोड़ दिया. ऑल ऑफ दीज इंटरेक्शंस दैट यू डू आर गेटिंग रिकॉर्डेड एंड उसके बाद में दे गेट प्रोसेस्ड बाय सम पीपल, राइट? तो वो इनसाइट बन जाती है. तो ये जो तो देयर विल ईदर बी अ प्रॉब्लम, देयर विल बी एन इनसाइट, right? Most of the times we are designing to solve the problem that we have identified, or we are curious to explore the insight that we have, and we are curious to explore okay, is there a opportunity for better business, or let's say is there an opportunity for more revenue from this insight, or is there something we can add into users life from that insight? Most of the time design happens like that, but sometimes when you have a fun idea, right? जैसे कि टिकटॉक टिकटॉक कोई प्रॉब्लम नहीं सॉल्व कर रहा था, ठीक है? टिकटॉक जब डिजाइन हुआ तो कोई इंसाइट नहीं थी उसमें कि उसको लगा होगा कि यार मैं ऐसे वाला टाइमलाइन बना दूंगा ना तो लोगों को बहुत जिंदगी में उनके ना ऐसा बहुत सारा एकदम कुछ कुछ नया उनकी जिंदगी में खुशी से आ जाएगी, ऐसा कुछ नहीं था, राइट? इट स्टार्टेड एज अ फन प्रोजेक्ट. So a lot of the times when projects start, in fact, most of the apps that we are addicted to today started as fun projects. They were not solving any problem. Facebook, it was not solving any problem जब वो start हुआ था. Instagram, nothing, right? Snapchat, कुछ भी नहीं कर रहा था. ये सारे के सारे कॉलेज के बंदों ने स्टार्ट किए थे जो कि they just wanted to have fun. They had a curiosity, they had a niche, and they wanted to scratch it, right? So that is also a very, very common way, or let's say common, motivation behind people designing, which is या आप प्रॉब्लम्स आपके पास में एक प्रॉब्लम है, आपको पता है कि आप प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं. जैसे कि एटीएम का इंटरफेस होता है, आपको लगता है कि यार ये 50 साल से ऊपर के जो लोग हैं जिनका टेक्नोलॉजी से अवेयरनेस कम है, ये लोग नहीं कर पाते हैं उसको यूज, राइट? दैट इज अ लेजिट प्रॉब्लम. हम सब ने कहीं ना कहीं एटीएम में जाकर के किसी अंकल आंटी की हेल्प करी हुई है, राइट? दैट इज अ प्रॉब्लम. Now you as a UX designer can pick up that problem and you can say कि okay, I will design a simpler interaction जिससे कि जो सीनियर सिटीजन हैं या जो above 50 के लोग हैं वो भी अपने पैसे निकाल पाए उससे, right? That is one thing. उसके अलावा you can have an insight. आपको पता चल रहा है कि okay, there is an upcoming sector, एक बहुत नया सेक्टर आ रहा है जिसमें probably $1 billion की अपॉर्चुनिटी है अगले 2 सालों में, and you can create an app, you can create a product to exploit that opportunity and get some revenue, right? You can design a product for that. And third, आपको बस मन कर रहा है, आपको लग रहा है कि it will be a fun thing. You have some idea कि यार इस तरह की एक ऐप बना देता हूँ
So it will be a fun thing to use, just like people use Instagram. So that is also one way you can design. These are the three most important motivations, or let's say, factors that are behind the design, which push us as designers to design. Okay, let time for comments. If you got some value from this point, post a yes in the chat, and I'll move to the next point. ठीक है, चलो. Okay, let's see. The next section I have is, yeah, क्यों करना चाहिए मुझे, right? Why should you do it? You can go to coding also, उसमें भी पैसा बहुत है, right? So, and this section, I have never talked about this section. Like I've never used this technique to motivate people to get into design. कि design में पैसा बहुत है. But I'm going to do it today because I know you guys will be very curious, क्योंकि college में सबको जानना होता है ये company placement में कितना offer दे रही है, right? So, इंडिया में presently जो average salary है UI UX designer की, which is you are an average candidate, you know about all the things. आपके पास में आपने केस स्टडी पोर्टफोलियो, आपने कुछ चीजें बना रखी हैं, यू हैव सम वर्क टू शो, एंड यू आर अ डिसेंट इनफ डिजाइनर एट द वेरी लीस्ट, राइट? अंटिल अनलेस यू हैव सम सीरियस स्किल इश्यूज कि आपको अभी कुछ स्किल्स डेवलप करनी है, व्हिच इज आपके पास कम्युनिकेशन एंड ऑल है. 6 to 8 LPA is a very easy salary. Like 6 to 8 LPA, which is 40 to 50, 55,000 rupees a month. That salary is very, very easily reachable. मेरे अराउंड 7 से 8 स्टूडेंट्स मतलब मेरे हैं जो ऑलरेडी इस सैलरी पे काम कर रहे हैं. सो 6 to 8 lakh rupees, which is, I would say, development, maybe that is the standard salary, right? It is on par with the developers. Then अगर आप बहुत एक्सेप्शनल हो, राइट, एवरीबडी वांट्स टू नो व्हाट इज द सीलिंग, कि मैं कहां तक रीच कर सकता हूं इंडिया में. I would say कि if you have 1 year to spend, if you have 1 year that you can dedicate to design, you can easily reach up to 22 to 24 lakh rupees as a beginner, as a fresher also. But for that, you'll have to do a lot of work. Like you'll probably have to do at least 6 months of internships, right? You'll have to have a few projects in your portfolio, but that is there. मतलब आपको कोई रोक नहीं रहा है. If you can, in fact, companies are very excited, by the way, to hire new people. You know why? Because new people have a lot more passion in them, and they have a lot more ideas in them. That is why young designers get paid a lot. Like, so 20 to 24 LPA, if you can, starting from today, if you can dedicate at least 12 months to design, you can easily reach. Like मैंने around जो 10 स्टूडेंट मेरे जो ग्रेजुएट हुए हैं, 10 के 10 प्लेस्ड हैं, and the highest guy, as I told you, he has a salary of 17 LPA, and he's still, like, उसको भी I think 6 महीने भी नहीं हुए, because he started in July, he's already getting offers more than 20 LPA. So if he want to, जबकि 4 से 5 महीने हुए, because he has that skill, he has a good portfolio, he is getting offers again once more than 20. So if you want that, तो that is there now. चलो स्टार्टिंग सैलरी हो गया. व्हाट अबाउट 5 years, राइट? 5 साल में अगर एक इफ अ गाय जॉइंस Amazon, let's say, right, which is a very high paying company, in Amazon as a software developer, if you stay there for like 5 to 6 years, you can easily cross 50 60 LPA. In fact, I have a friend who has a salary of 1.2 CR in India, right? And he has about 7 years of experience. So what is the future prospect of design? In general, it takes about 10 years for a designer to reach the head of design position, right? So around 10 years, and every head of design, like at least every big company's head of design, is getting paid in crores. तो अगर आप 10 साल रहते हो, तो 10 साल में, even if you start from 5 LPA, if you keep growing, you can reach that number, 1 CR, 1.2 CR. Like Airtel may be, it's a secret, but yeah, I know, okay, the salary is in crores of head of designs, right? So it has a very lucrative career. Second thing, how long can you be a designer, right? क्या designer बन के जिंदगी कट जाएगी? Yes, कट जाएगी. Design, there are people today, there are people who have been designers for about 10 years. Like they have been the pioneers of the industry. They have been UX designers for 10 to 15 years. Then there are people who used to be graphics and communication designers and interaction designers, and who have been designers for at least 25 years. And you can ask anyone,
यू डिजाइन हैज अ वेरी लॉन्ग करियर, एंड दिस आई एम सेइंग क्योंकि जैसे ही आप में से किसी को डिजाइन में इंटरेस्ट आएगा एंड यू गाइस विल स्टार्ट फाइंडिंग, आप यूट्यूब पे सर्च कर रहोगे, कहीं ना कहीं पे आपको एक पोस्ट मिल जाएगा कि एआई के आने की वजह से यूआई यूएक्स डिजाइन का करियर खत्म होने वाला है। एंड ये लास्ट के 2 साल में दिस हैज बीन अ वेरी कॉमन ऑकरिंग थीम, मतलब आई हैव बीन आस्क्ड दिस क्वेश्चन सो मेनी टाइम्स के सर क्या एआई के आने से यूआई यूएक्स डिजाइन का करियर खत्म होने वाला है? नहीं, लाइक वेरी फ्रैंकली किसी एआई के अंदर में इतनी कैपेबिलिटी नहीं है कि वो यूएक्स डिजाइन कर सके। बटन्स बनाना इज नॉट अ बिग थिंग, राइट? आप में से जो भी एआई एमएल के स्पेशलाइजेशन कर रहे हो आपको पता है कि इनपुट फील्ड, बटन, ग्राफिक्स, टेक्स्ट, इसका ऑटोमेशन करना कोई बड़ी बात नहीं है। डाली करके एक एआई आ गया है, मिड जर्नी करके आ गया है, रिसेंटली गूगल ने एक इमेजिन करके यूआई जनरेट किया जिसमें आप एक प्रॉम्प्ट डालोगे और वो आपको एक ग्राफिक एकदम फोटो, मतलब फोटोजेनिक एक इमेज जनरेट करके दे देगा। यस, दैट इज देयर, but I don't see, at least in the next 10 to 15 years, there'll be an AI that will be able to comprehend UX, right? क्योंकि UX, because see, AI में emotions नहीं होते हैं, that's the problem. AI, you can simulate emotions, but AI cannot really look at the data and be like, okay, yes, okay, इस बंदे को ना प्रॉब्लम आ रही है इतने बजे, तो मेरे को ना इसको इसका शायद बटन का साइज बड़ा कर देना चाहिए। It will be very hard for an AI to actually get that data. सो जस्ट इन केस, ये मैं अभी इसलिए बता दे रहा हूँ क्योंकि आप में से किसी को इंटरेस्ट आ जाएगा, 2-4 महीने आप उस पर जा रहे होगे, फिर एक पोस्ट देखोगे एंड यू माइट गेट डिस्करेज्ड। मेरे से 2 साल में 10-15 बार लोग पूछ चुके हैं, तो नहीं, एआई विल नेवर कम इन द वे ऑफ यूआई यूएक्स। Okay, now there's a question from Ujjwal. Okay, Ujjwal is very like interactive. I'm very happy, Ujjwal. How can we become the part of community or can learn? Okay, come under your mentorship. Okay, bro, अभी दिक्कत ये है कि ever since I joined Airtel, it's very hectic and I am working on very very big projects in Airtel. So I don't do mentorships, but hold on. By the end of the presentation, I'll tell you कि कैसे सीखना है. Like it is a complete roadmap, so I will tell you कि कैसे सीखना है, क्या क्या हो रहा होता है. ठीक है? We are coming there. I told you, okay, what is your motivation, right? What should be your motivation? UI UX design has a very very long career, and you will get every kind of opportunity. If you want to become a freelancer, I have freelance for 4 years. Like with my previous company's job, I was also a freelancer for 4 years. I have worked with clients for Singapore, Australia, Germany, USA. I have worked with so many people, right? Freelance karna hai, it is there. You want to go abroad, right? You can literally move to any developed or developing country and you will find companies with UI UX design opening. I might go to US in 2 years probably. In fact, I might go there sooner, right? I am actually already planning to go abroad and it is very easy. You want to be among good people, right? ये भी होता है, right? कि ठीक है पैसा मिल गया. Will we be among good people? Will we like our work? I think designers are much more fun than developers because I live among them, right? We have an 80 people design team and we have like 100-150 people developer team. For some reason, if you are a creative, you bond really well with creative people. So, and you will enjoy work a lot more. So that is also there. So it's like paisa, yes. Independence, yes, you can go freelancer, and there are freelancers who are earning $100,000 to $200,000. You can check them out on YouTube. There are channels for that. You want to move abroad, yes. You want to be part of a good community. There are so many good communities online, but in general, every company's design team up. So you can go Google for any company that you like, right? Google, Facebook, Amazon, या फिर इंडियन कंपनीज, पेटीएम, फोन पे, किसी भी कंपनी का डिजाइन का पेज आप चेक कर सकते हो, आपको पता चल जाएगा कि उनको एक्चुअली में वो मजे कर रहे होते हैं, तो बहुत मजे भी, राइट? सो आई थिंक, सो आई जस्ट वांटेड टू मेक इट क्लियर कि इट हैज एवरीथिंग दैट यू विल नीड फ्रॉम अ गुड करियर. Moving on, by the way, a yes would be very 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 helpful if you found any value. Let's see. Yeah, there is a section I have. So are there alternative careers, right? कि क्या, okay, I want to get, I'm, मतलब you guys might be thinking कि ठीक है चलो मेरे को समझ में आ गया, कुछ इंटरेस्टिंग है यूएक्स में, क्या क्या कर सकते हैं यूएक्स में, राइट? क्या डिजाइनिंग, एग्जैक्टली डिजाइनिंग इज द ओनली वे यू कैन गेट इनटू यूएक्स? नो. सो यूएक्स में दर अपार्ट फ्रॉम बीइंग अ यूएक्स डिजाइनर, राइट, कि जो बैठ करके इंटरफेसेस डिजाइन कर रहा होगा कि हेडर, नेविगेशन बार, देयर आर 3 more careers in यूएक्स डिजाइन जो कि आप कर सकते हो. फर्स्ट इज यूएक्स राइटिंग. Airtel has an 85 people design team in total.
out of them we have 8 UX writers. What is a UX writer? So in a product, जब आप एक प्रोडक्ट में जा रहे होते हो तो हर कॉपी जो आप देख रहे होते हो, राइट, कि ओके एक हेडिंग है कि वेलकम, लेट्स से वेलकम ईशा, राइट, आपने कोई ऐप लॉन्च लॉन्च करी, उसके ऊपर पे लिख करके आ रहा है वेलकम ईशा। देन आप कुछ काम कर रहे थे, सडनली एक पॉपअप आ गया बीच में, राइट, उसने वो पूछ रहा है आपसे कुछ कि ओके बिफोर यू प्रोसीड यू नीड टू यू नो दिस इज द रीजन, या ये कुछ होने वाला है, प्लीज कंसिडर दिस। देन वो आपको दो चॉइसेस देता है कि ओके और कैंसिल, राइट। तो वो जो टेक्स्ट उस पॉपअप में आ रहा था वो भी एक राइटर लिखता है। तो जो भी कंटेंट राइटर्स यूएक्स डिजाइन में भी इंटरेस्टेड है, राइट, आपको डिजाइन पसंद है, यू लाइक बीइंग क्रिएटिव, you can be a UX writer. And UX writer is a relatively new field, but fortunately all the good companies have UX writers, which means you have, so it's like आपको bad company मिलने के chances बहुत कम है if you are a content writer and you want to be a UX writer now. तो we at Airtel have 8 UX writers। तो हम Figma में जब हम डिजाइन कर रहे होते हैं तो लिटरली हम हर कॉपी, हमारे डिजाइन का हर कॉपी कॉपी राइटिंग टीम से, यूएक्स राइटिंग टीम से वेरीफाई होकर के जाता है। हम नहीं लिख सकते कि बटन में ओके डाल दें हम अपने मन से, उनका मन है कि सबमिट डालना है या पोस्ट डालना है तो वो पोस्ट ही जाएगा, राइट। तो दैट इज वन वेरी गुड करियर एक्चुअली। देन there is a UX researcher career. So UX researcher is the second most popular career in UX design, and UX researchers are so important. अब UX researcher होता क्या है? So मैंने आपको बताया था कि हम जब डिजाइन कर रहे होते हैं तो हमें या तो कोई प्रॉब्लम पता करनी होती है, राइट, कि प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं हम, या फिर हमें कोई इंसाइट मिलनी चाहिए, राइट। अब बात यह है कि जब आप एक बड़ी टीम में एक ग्रोइंग कंपनी में काम कर रहे हो तो आपके पास में बैक टू बैक काम होता है कि यार ये करना है, ये करना है, ये करना है। A lot of the times you will not have time कि problem identify करो, right? Even though it is very legitimate part of your job कि अगर आपके पास में कोई प्रॉब्लम आती है आप उसको अपनी टीम के सामने रख सकते हो कि ओके आई थिंक दिस इज द प्रॉब्लम वर्थ सॉल्विंग। बट when the products are big, right, जैसे एयरटेल का स्कोप है, एयरटेल के लाइक 10,000 एम्प्लॉइज है, बहुत बड़ी कंपनी, दे हैव सो मेनी प्रोडक्ट्स। अब बाय द वे यू गाइस वुड थिंक कि एयरटेल का सिर्फ सिम होता है, देयर आर सो मेनी प्रोडक्ट्स दैट एयरटेल डज। तो अब कौन आइडेंटिफाई करेगा, राइट? मेरा काम डे टू डे मैं स्क्रीन डिजाइन कर रहा होता हूँ, कौन बंदा बैठ करके यूएक्स जो हमने गूगल एनालिटिक्स लगा रखी है, कौन बंदा वो स्टडी कर रहा होगा, कौन बंदा जा करके डे टू डे हमारे एयरटेल के कस्टमर से बात कर रहा होगा कि क्या उन्हें नेटवर्क आ रहा है, क्या उन्हें रिचार्ज करने में कोई प्रॉब्लम हो रही है, क्या उनका एयरटेल का डीटीएच का कनेक्शन में कोई प्रॉब्लम हो रही है, राइट। तो देर आर टीम्स ऑफ यूएक्स रिसर्चर्स हु डू सो मच ऑफ रिसर्च, मतलब फ्रॉम देयर कि ओके आपको एयरटेल का सिम अच्छा लग रहा है या नहीं, विच इज अ वेरी बिग क्वेश्चन, राइट, कि आप जियो में स्विच करने जा रहे हो, मे बी आई कैन डू समथिंग फॉर यू जिससे आप एयरटेल पे ही स्टे कर जाओगे, राइट। दोज आर वेरी हाई लेवल क्वेश्चंस, उसके लिए भी रिसर्च कर रहे होते हैं। एट द सेम टाइम अगर हमने कोई फीचर डाला जिसमें मैसेज का आइकन डालना है मुझे, राइट, तो मैसेज के आइकन के लिए मैं चैट बबल भी डाल सकता हूँ जो ऐसे सर्कुलर होता है, और मैं एक जैसे गूगल में अभी जो हमारा कमेंट का आइकन आ रहा है, राइट, विच इज अ टेक्स्ट का रिप्रेजेंटेशन है, तो मैं ये भी डाल सकता हूँ। इन दोनों में से कौन सा आइकन बेटर यूजर्स रिकॉग्नाइज कर पाएंगे, क्योंकि एयरटेल के 330 मिलियन कस्टमर्स हैं, 33 करोड़ कस्टमर्स हैं, सबको वो चैट बबल देख करके चैट की फीलिंग नहीं आती है, राइट। नॉट एवरीबडी इज एबल टू प्रोसेस इट। तो इतना छोटा सा काम कि उसकी भी रिसर्च होती है एक्चुअली में कि ये आइकन बेटर है या ये आइकन बेटर है। तो यहां से लेकर के वो हायर लेवल क्वेश्चंस, इस बीच के बहुत सारे रिसर्च ओरिएंटेड काम होते हैं जो यूएक्स रिसर्चर्स कर रहे होते हैं। और जो क्वेश्चन पूछा था आपने बीच में, किसने पूछा था डिजाइन साइकोलॉजी को लेकर के? ओके, संध्या, या सो संध्या, यूएक्स रिसर्च इज द डिसिप्लिन जिसमें साइकोलॉजी की बहुत ज्यादा जरूरत होती है। लाइक डिजाइनर्स को तो साइकोलॉजी आनी ही आनी चाहिए, बट यूएक्स रिसर्चर्स आर लिटरली इन दी साइकोलॉजी बुक्स, इन अंडरस्टैंडिंग दोस प्रिंसिपल्स, हाउ आर आर यूजर्स थिंकिंग, क्या चल रहा है उनके मन में, राइट, के ओके मार्केट में बैठ करके कोई रिचार्ज कर रहा होता है, कोई बंदा ठेले में बैठ करके, उसके पास में ठेला है, उस वो भी रिचार्ज कर रहा होता है, एंड एवरीबडी इज थिंकिंग differently about Airtel and about phones and technology in general. So if you have interest in technology, psychology, you can explore UX research also. Then there is one more field which is motion designer. आप में से किसी ने क्रेड की ऐप देखी है क्या? गूगल पे क्रेड के एड वगैरह देखे हो या किसी ने क्रेड की ऐप यूज करी हो? रिसेंटली क्रेड की ऐप हैज बीन वन प्रोडक्ट जिसका बहुत ज्यादा मतलब जिसपे मोशन डिजाइन है, या फिर आप में से कोई फैम पे वगैरह यूज करता है? यू गाइज हैव बीन, आप अभी टीनेजर से ट्रांजिशन कर रहे हो तो मे बी
लाइक फैम पे सो देयर आर सो ओके, चलो मैं और सिंपल एग्जांपल देता हूँ आपको। कभी आपने ऐसा देखा है किसी वेबसाइट पे गए आपको एक बहुत ही फनी सी लोडिंग एनिमेशन आ रही थी, राइट? जैसे गूगल क्रोम में, जब गूगल क्रोम के पास में नेटवर्क नहीं होता है तो वो एक डायनासोर आ रहा होता है जिसपे आप कीबोर्ड से इंटरेक्ट कर सकते हो एंड स्टार्ट जंपिंग, राइट? वो इंटरेक्शन चल रहा होता है। देन कभी आपको बहुत अच्छे एनिमेशन आ रहे होते हैं कि एकदम से पेज लोड हुआ, आपने फिर उसको स्वाइप कर दिया तो वो कहीं वो स्क्रीन में एक ट्रांजिशन आ गया, राइट? सो देयर आर सो मेनी डायनेमिक थिंग्स दैट हैपन इन द इंटरफेस। इसके लिए देर आर एक्सपर्ट्स हु आर कॉल्ड मोशन डिजाइनर्स, जो कि यूआई में एनिमेशंस, नॉट जस्ट रैंडम एनिमेशन, राइट? कि ओके ये बटन को हम क्यों ना ऐसे ऐसे पुफ करके हटा देते हैं यहाँ से, डिसमिस ही तो करना है, राइट? एक ऐसे बॉटम से पॉपअप्स आया, हम उसको नॉर्मली हटाने की जगह एक उस पे टिकटॉक स्टाइल के ऐसे ऐसे ब्रेक करके ट्रांजिशन, नॉट दैट, बट मीनिंगफुल ट्रांजिशंस that basically help you interact with the product and help you understand product क्या करना चाह रहा था. So there are people who design those and they also get paid on par with UX designers. So that is the third category, which is motion designer. So UX designer बनने के अलावा आप तीन चीजें और कर सकते हो. First is UX writer, second is UX researcher, third is motion designer. तो चार careers और हैं UX design के अंदर में. Okay, how can peak best color combination for your website? यार that's a very subjective question, और इस पे ये एक अलग से घंटे का टॉपिक है, वेबसाइट पे कलर कॉम्बिनेशंस कैसे बनते हैं. तो लाइक यू नीड टू अंडरस्टैंड कलर थियरी के, फिर ब्रांड गोल्स एंड ऑल, बहुत सारी चीजें होती हैं. ओके, सो सम गुड प्लेटफॉर्म्स टू अप्लाई फॉर सच इंटर्नशिप वंस यू गेट अ गुड इनफ पोर्टफोलियो. लिंक्डइन, दुनिया की सबसे अच्छी जॉब्स लिंक्डइन से लग रही होती हैं. दैट्स इट. मैंने आज तक लिंक्डइन के अलावा किसी जगह से अप्लाई नहीं किया. जो बेस्ट जॉब्स मिली हैं मुझे सारे के सारे लिंक्डइन से मिली हैं. सेकंड, देर आर ऑन लिंक्डइन यू विल फाइंड पीपल हु रन डिजाइन रिक्रूटमेंट एजेंसीज, तो आप उनसे भी कांटेक्ट कर सकते हो. जतिन, डू यू हैव अ पोर्टफोलियो ऑलरेडी? Comment yes or no. I would be happy if you have a portfolio. I might be able to help you with something. So comment yes or no. What is the difference between, okay, let's see. What is the latest question? There's a lot of confusion for UI versus UX. What's your perspective regarding this? Do I need to learn both? Have done internship in a UI UX design agency. Okay, so K Perry. पहली बात तो यह है कि UI and UX, UI versus UX is wrong. Anybody who says कि UI versus UX होता है design industry में, I would say needs to learn a little bit more. You cannot say UI versus UX. They always coexist, UI and UX. आप IRCTC की वेबसाइट है, ठीक है, उसका UI भी बेकार है, उसका UX तो और भी बेकार है. आपको कभी भी ऐसा खुशी नहीं मिल रही होती कि यार आज तो IRCTC की वेबसाइट यूज करके ना मजा ही आ गया मुझे. आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ, राइट? आप ट्रेन बुक करने गए होगे, कभी नहीं हुआ. तो उसका यूआई भी बेकार है, यूएक्स भी बेकार है. क्या वो एक अच्छा प्रोडक्ट है? नहीं. और आपके पास में अगर कोई अल्टरनेटिव होता तो आप आईआरसीटीसी से स्किप कर जाते, राइट? तो ऐसा नहीं होगा कि आपने, या तो फिर ऐसा हो कि यूआई बहुत अच्छा कर दिया, चलो आपने, ठीक है, यूआई बहुत अच्छा है, बटन्स देखने में सुंदर लग रहे हैं, बट हर पेज में इतना बड़ा सा फॉर्म आ जाता है कि स्क्रॉल करके एक एक बार में भरते रहो पूरा पूरा, right? That is bad experience, but that is good UI, right? Is that exactly? There is no alternative of UI IRCTC, but if there was, we would have switched to that. अगर वो better experience दे रहा होता तो हम उस पर चले जाते. Anyway, so yeah, so UI and UX, they always go together. If you want to have a good and long and fulfilling career in UI UX design industry, try to learn both, because they literally never exist alone. मैंने एज अ विजुअल डिजाइनर, एज अ यूआई डिजाइनर भी काम किया है. तब भी आपको यूएक्स डिजाइनर से बातें करनी पड़ती हैं, आपको कम्युनिकेट करना होता है, आपको प्रोडक्ट मैनेजर्स के साथ में काम करना होता है. ऐसा नहीं होगा कि आपको सिर्फ आपको बटन सुंदर बनाना आता है या आपको बहुत सुंदर सुंदर चीजें बनानी आती है, आपको नहीं पता कि यूजर्स को अच्छा क्या चीज यूज करने में लग रहा होगा, राइट? ऐसा नहीं हो सकता कभी. दैट्स नॉट पॉसिबल. यू नीड टू नो बोथ. Let's see. Okay, how alternate careers हो गया. Okay, yeah, how to learn. Yes, let's अब आ जाते हैं हम कि सीखना कैसे होता है. तो दो पाथ होते हैं डिजाइन सीखने के. फर्स्ट इज सेल्फ लर्नर, सेल्फ स्टार्टर पाथ. सेकंड होता है हमारा एक बूट कैंप या किसी किसी मेंटर के साथ में सीखना, राइट? आज की तारीख में आई एम अ सेल्फ, लाइक, ओके, मोहित हैज रेज्ड हैंड. मोहित, प्लीज
please put your question in the comment box. I'll come back. How to pick a niche in UX umbrella? Okay, cool. So yeah, let me complete and then I'll come back to your question. So you can be a self starter if you're in the first year. I would be happy to say कि yes, you can be a self starter. YouTube से आप एक साल YouTube से learn कर सकते हो, ठीक है? But and I am a self starter. मैंने like I have been in the design industry for about 8 years. 2 साल खुद से किया, फिर उसके बाद में 6 साल से like I have been working. People who learn under a structured program will always have an edge. Why? Because when you're learning by yourself, you will miss something, and you will never know. You will not know what you don't know actually. Like you'll miss it, and you'll be like, yeah, हो सकता है. And then someday, maybe a few months later, you'll be like, oh, ये भी कुछ होता था, ये तो मेरे को पता ही नहीं था, right? ये आपके colleague ने कोई नया term बोल दिया, you'll be like, अच्छा ये भी कुछ होता है. And that is the problem with people who are self starters. So if you can invest a little bit of money, because इट सीम्स लाइक आपने ऑलरेडी, आई नो आपने बीटेक में ऑलरेडी काफी फीस दे रखी होगी, राइट? प्राइवेट कॉलेज आर वेरी कॉस्टली. तो इट विल बी कि हाँ ओके, अब पापा से मैं बोलूँ इसके लिए भी पापा मेरे को पैसा दो. पापा बोल रहे हैं 4 साल से बीटेक कर रहा है, उससे तरह कुछ नहीं हो रहा, राइट? बिकॉज दैट इज द प्रॉब्लम, राइट? ये होता है, आप बोलोगे कि 1 लाख रुपए मेरे को चाहिए पापा, राइट? एक कोर्स करना. बट ऑनेस्टली दैट investment going for a boot camp or a good institution will have a much higher ROI. इसलिए if you are in the third year or final year of your career, final year people will have 6 months, third year people will have 1.5 year. I would request कि go for a good institute. Go for a good institute which has an umbrella of courses, good faculty. ठीक है? अब कुछ नाम भी मैं बता देता हूँ. इंडिया में there are 3 good schools. Google UX design course, yeah, it is good, but you cannot get a job just by it. It's a very good course, very good course. Google का एक free course है. In fact, I think free है. There is a little bit of charge for it. Are you a UX designer, Rahul Deshwal? Yes, yes, Rahul. I am a UX designer. I work at Airtel. I've been working for about 6 years. So yeah. So Google का कोर्स बहुत अच्छा है, but that's not enough. Like आपकी इंटर्नशिप भी नहीं लग पाएगी उस पे. It will take you a lot of time. So yeah, in institutes, there is one institute named Design Boat. Okay, that's popular. I know because I've been here थोड़ा कुछ सालों से, तो I know the founders. Design Boat करके you will Google, you'll find Design Boat. They are based in Delhi and Bangalore. They are good people. They are very good people. Their course, I think they have a 6-month boot camp. Their course is really good. It will cost you about 75,000 rupees for 6 months, but you will be placed. You will be placed. Why? Because UX design में requirement actually में इतनी है, और अच्छे trained designers literally इतने. जब मैं hire करता हूँ किसी भी opening के लिए, तो 500 से 600 पोर्टफोलियोज आ रहे होते हैं. अगर हमने एयरटेल में डाल दिया ओपनिंग में, तो 500 से 600 पोर्टफोलियो आ जाते हैं, राइट? सीनियर डिजाइनर, जूनियर डिजाइनर के लिए. बट बहुत बहुत मतलब अच्छे लोग बहुत कम मिल पा रहे होते हैं कि आपको देख करके लगे ओके दिस गाय हैज दैट. तो एंड दोज आर पीपल हु हैव either invested a lot of time or have gone through good courses. So Design Board first. There is 10K Designers from Bangalore, which is very popular. His founder is the ex-head of design of an academy. That is good. That is very costly, but and also they have limited intake. वो साल भर में 80 लोगों को ही ले रहे होते हैं, right? Then my favorite is And Academy. There is a institute named And Academy. मैं नाम भी डाल देता हूँ. ये मेरा favorite क्यों है? So the founders, and I know the founders of these also, they run a design college. So they run a design college named IIAD. It's called Indian Institute of something something design. It's a graduation design में they do BDS, right? तो they have a much bigger team than all. Like इंडिया में जितने भी लोग UX design के छोटे छोटे courses चला रहे हैं, उनसे बहुत बड़ा. What's the name of your course? I don't have a course pro B. So yeah, And Academy people have a big backing. Like they run a proper design college. And Academy is their smaller, smaller domain, जिसपे वो सिर्फ UI UX ग्राफिक्स एंड मोशन डिजाइन के 6 महीने से 1 साल के बूट कैंप चला रहे होते हैं.
I have met these people, I've hung out with them. मतलब we've attended a design conference last month. तो वहां पर I was there, very good people and very knowledgeable people. Like you will be with people जो 20 से 25 साल से डिजाइन में हैं. So like we had so many discussions, we had debates and all. So I was very impressed by them. That's why I would say कि these three, right? So and academy, design board and 10K designers. राइट. ये तीन जो मेरी टॉप रिकमेंडेशन है, आई वुड लाइक एंड अकेडमी फर्स्ट, डिजाइन बोर्ड सेकंड, थर्ड 10K डिजाइनर्स. बट 10K डिजाइनर्स बहुत महंगा है, 1 लाख रुपए से ऊपर का कोर्स पड़ रहा होगा आपको 4 महीने का, एंड ओनली लिमिटेड इनटेक, राइट. वो साल भर में 30 या 40 लोगों के 2 बैच ले रहे होते हैं, राइट. तो अगर वहां पर आपको नहीं मिलता तो आप ऊपर भी जा सकते हो. इसके अलावा देर आर सम कोर्स, सम पीपल, सो यूट्यूब में बहुत सारे लोग सिखा रहे हैं, इंडिया में बहुत सारे लोग सिखा रहे हैं. आई वुड रिक्वेस्ट यू, इन तीनों के अलावा किसी के पास मत जाओ. बहुत रैंडम लोग सिखा रहे हैं, बहुत ज्यादा. तो वी कैन अफोर्ड 10K डिजाइनर्स इफ कॉलेज विल पे द फीस. नहीं यार, ये नहीं हो पाएगा राहुल. तो ओके, आई थिंक यू गाइस आर क्लियर, राइट. दो पाथ होते हैं. जो लोग फर्स्ट ईयर या सेकंड ईयर में है, आराम से सेल्फ स्टार्ट करो, कोई जरूरत नहीं 1 लाख रुपए देने की. बट हाँ, if you can afford it, go for it right now, because by the time you are in the fourth year, you will be a rock star designer. You will have 2 years of experience and you will be like companies तुम्हें ढूंढ रही होंगी, क्योंकि डिजाइनर्स इतने रेयर ब्रीड होते हैं ना, कंपनीज आपको पोच करने के लिए बैठे होंगे कितने पैसे चाहिए. सो बाकी अगर पैसे हैं, और सॉरी जो थर्ड फोर्थ ईयर के लोग हैं, प्लीज गो फॉर अ बूट कैंप अभी के अभी. नाउ लेट्स सी, लास्ट है कि या ओके. सो ओवरऑल जॉब लगती कैसे है, मैं लाइक प्रोसेस कंप्लीट कर देता हूँ. आपने डिजाइन में इंटरेस्ट आया आपको, आपने क्या किया, आपने कुछ दिन सेल्फ स्टडी की आपने, ठीक है, आपको समझ में आ गया क्या करते हैं. फिग्मा, आई एम होपिंग कि फिग्मा का अगर आपने नाम नहीं सुना है तो फिग्मा इज द डिजाइन टूल जो कि हम सारे यूज कर रहे होते हैं. इसके अलावा भी दो टूल्स हैं, स्केच करके है एंड अडोबी एक्सडी है. अभी सिर्फ मजबूरी में लोग उन्हें यूज कर रहे होते हैं, जिनकी कंपनीज ने उसका साल भर का सब्सक्रिप्शन ले रखा है. फिग्मा इज द ओनली टूल दैट यू शुड लर्न राइट नाउ. टूल सारे सेम होते हैं बाय द वे, सब में सेम फीचर होते हैं. इस टूल को चेकआउट कर लेना. तो दैट इज द टूल दैट वी यूज. तो अब आपने फिग्मा वगैरह मान लो सीख लिया. इफ यू आर रेडी, वंस यू हैव गॉन थ्रू द बूट कैंप आल्सो, लेट्स से, राइट, उसके बाद में होगा क्या, while you're in the boot camp you will be given case studies, not given case studies, in fact you'll have to prepare case studies, right. because हम क्या होता है, हर क्रिएटिव प्रोफेशन में आपको एक पोर्टफोलियो प्रिपेयर करना होता है, वो लेकर के आप रिक्रूटर्स के पास में जाते हो, राइट. जैसे आपको जो डेवलपर्स, आप लोग CSIT के कोर्सेज करो, आपको पता है कि यार आपके या तो गिटहब में बहुत सारे अच्छे से प्रोजेक्ट पड़े हों, नहीं तो फिर आपने हेरोकू नेटलिफाई कहीं पर होस्ट करके रखे होंगे, आपको लिंक देने पड़ेंगे. सिर्फ ये कहोगे कि मैंने ये प्रोजेक्ट बनाया था, उससे कोई नहीं मानेगा, आपको डेमो रन करके दिखाना होगा. तो राहुल, ओके, राहुल ब्रो, आपने बहुत लेट ज्वाइन किया, हमने सब कवर किया था इस पे, बट I'll टेल यू वन मिनट. सो या, सो सिमिलरली डिजाइनर्स को पोर्टफोलियो बनाना होता है. अ गुड पोर्टफोलियो इज विच हैज about 2, 3 or 4 case studies. 3 is the magical number to have in your portfolio. 3 केस स्टडीज रखनी होती हैं. क्या होती है केस स्टडी? तो जो हमने बोला था ना कि प्रॉब्लम या इनसाइट पे हम डिजाइन करते हैं, या तो हमारे पास में एक प्रॉब्लम स्टेटमेंट होगा जिसको हम सॉल्व कर रहे होंगे, या फिर हमारे पास में एक इनसाइट होगी और उस इनसाइट को हम यूटिलाइज या एक्सप्लॉइट कर रहे होंगे, या तो यूजर्स के बेनिफिट के लिए या फिर बिजनेस के बेनिफिट के लिए या दोनों के बेनिफिट के लिए, राइट. तो दैट इज कॉल्ड अ केस. यू हैव अ केस. जैसे कि एटीएम जो है, 50 साल से ऊपर के लोग एटीएम नहीं यूज कर पाते हैं, दैट इज अ केस, दैट इज अ प्रॉब्लम, राइट. दैट व्हेन यू स्टडी दैट केस, ओके के परी, चलो आई एम हैप्पी कि यार कुछ लोग हैं जो एक्चुअली यूएक्स लाइन को फॉलो कर रहे हैं. आई विल टॉक टू यू गाइस पर्सनली. आप लोग चाहो तो कैमरा ऑन करके या ऑडियो ऑन करके अभी हम 2 मिनट बाद इंटरेक्ट करेंगे, ठीक है. इफ दैट डजंट हैपन, यू गाइस डीएम मी ऑन इंस्टाग्राम, विल टॉक अगेन, ठीक है. मैं फिर से कर देता हूँ, चलो मैं अपना थोड़ा सा इंस्टाग्राम प्लग कर देता हूँ. very soon I'll be creating content actually. Matlab, I think in about 10 to 15 days, you guys will start seeing my carousels and reels. So you can follow my Instagram there also. Anyways, तो आपके पास में केस आ गया कि 50 साल से ऊपर के लोग नहीं एटीएम को यूज कर पा रहे. नाउ यू आर गोइंग टू स्टडी दैट केस. यू विल लर्न कैसे स्टडी करना है, दैट यू विल लर्न इन द बूट कैंप. एंड देन यू विल डॉक्यूमेंट द एंटायर थिंग. आप फिग्मा में बना सकते हो, गूगल डॉक में बना सकते हो. हाय हेलो नाना. तो
और वो केस स्टडी का वो जो आपका कंपाइलेशन होगा कि मैंने क्या क्या किया, मेरे को प्रॉब्लम कहाँ से पता चली, मैंने वैलिडेट करी कि हाँ ये सच में प्रॉब्लम है, फिर आपने जो जो किया काम, आप उस पूरी चीज को डॉक्यूमेंट करते हो, और ये चीज आप 2 से 3 प्रोजेक्ट अलग अलग उठाते हो, उनको करते हो और मिला करके आप एक पोर्टफोलियो बनाते हो। देन वो पोर्टफोलियो आप रिक्रूटर्स को सेंड कर रहे होते हो अपने जॉब एप्लीकेशन के साथ में, राइट। किसी भी लिंक्डइन जॉब एप्लीकेशन पे आप जाओगे, वो बोलेंगे आपको पोर्टफोलियो का लिंक देना है, फिर वो आप पोर्टफोलियो फॉरवर्ड करते हो। जब आपका पोर्टफोलियो शॉर्टलिस्ट हो जाता है, तो आगे क्या होता है कि फिर आपको यूजुअली 2 तरह के डिस्कशंस होते हैं, इनफैक्ट 3 तरह के होते हैं, चलो लेट्स कंप्लीट कर देते हैं। फर्स्ट, आपके पोर्टफोलियो में से कोई एक प्रोजेक्ट जो उनको सबसे इंटरेस्टिंग लग रहा होगा वो पकड़ेंगे, और मतलब इंटरेस्टिंग लग रहा होगा उसको पकड़ेंगे, उससे डिस्कशन करेंगे आपने, ठीक है। तो डिस्कशन कर रहे होंगे, तो पहला आपको रिक्रूटमेंट के बीच में एक आपके पोर्टफोलियो प्रोजेक्ट डिस्कस हो रहे होंगे। दूसरा, वो आपकी थ्योरेटिकल नॉलेज चेक कर रहे होंगे, कि थ्योरेटिकल इन द सेंस आपकी एम्पैथी चेक कर रहे होंगे कि आपको कितना समझ में आ रहा है चीजें, राइट। हाउ 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 मच आर यू एबल टू फील, क्योंकि एम्पैथी इज लाइक, एम्पैथी सब कुछ है डिजाइन में। अगर आप दूसरे की प्रॉब्लम से एम्पैथाइज नहीं कर पा रहे हो, तो मतलब दिक्कत हो जाती है। सो आपको आपकी एम्पैथी चेक कर रहे होंगे वाया डिस्कशन। तो सेकंड चीज, राइट, पहला पोर्टफोलियो का एक प्रोजेक्ट, सेकंड आपकी एम्पैथी वाया डिस्कशन, एंड थर्ड इज दे माइट गिव यू सम असाइनमेंट। सिंस यू गाइस विल बी बिगिनर्स, यू गाइस विल बी गिवन एन असाइनमेंट। एक डमी टास्क आपको दिया जाएगा, जिसको आपको घर पे बैठ करके सॉल्व करना होगा और आपको बना करके वो सबमिट करना होगा, राइट। वंस यू आर डन विद दैट, यूजुअली इतना ही होता है। अगर इफ दे आर ओके, यू आर हायर्ड। एट मैक्स देयर बी एन एचआर who will be discussing salaries and all with you, right। थोड़ा बहुत कल्चरल फिट चेक कर रहे होंगे कि हाँ आपका कम्युनिकेशन अच्छा है या नहीं, कहीं आप ज्यादा रूड तो नहीं हो अननेसेसरीली, राइट। तो वो चीजें आप चेक कर रहे होते हैं, बट usually that is the process. At the end of that, they'll send you an offer letter, आप negotiate करो, and you are hired as a UX designer, ठीक है। Now let's see, okay, it's been for 57 minutes, okay। आप लोग, okay, आप Perry, okay, I'm sorry if I'm mispronouncing your name। कैन यू पोस्ट योर क्वेश्चन अगेन, जो कि मैंने मिस कर दिया, एंड आई ड्रिंक वाटर, एंड उसके बाद में आई जस्ट कम टू द क्वेश्चन, ठीक है। अब हम सिर्फ बातें करेंगे। Yeah, so if you want, we can even extend the session for 5 to 10 minutes more. If We it can, is no problem. I'm So okay, मतलब if you guys have questions, yeah, I'm okay। Okay, just drop suddenly your 97 people are there, okay, yeah. what They just happened? joined just last minute. Okay, okay, ठीक है। So guys, just giving you a quick introduction. Those who have joined right now about Rajat. He's the senior UI UX designer at Airtel. Has 6+ years of experience in the domain and also mentors people in UX designing. So with this, yeah. So if you Yes, guys have any questions, you can drop it in the chat box. Also, we will be uploading today's session video on our YouTube channel. So if you guys want to go through again the video, you can access it from our channel. okay, so yeah, okay। राहुल ने पूछा, शुड वी हैव अ पोर्टफोलियो ऑन बिहांस और ड्रिबल। ओके, सो राहुल, आज बिहांस और ड्रिबल दोनों से बेटर है, अगर आपने नोशन का नाम सुना है, तो नोशन पे पोर्टफोलियो बनाते हैं लोग सबसे ज्यादा, या फिर पर्सनल वेबसाइट ही बनाते हैं, वर्डप्रेस वगैरह पे आप एक वेबसाइट बना सकते हो। दैट फॉर मी इज द बेस्ट वे टू मेक द पोर्टफोलियो। बट बिहांस एंड ड्रिबल में, बिहांस पे, okay, I have only one pure case study in my portfolio, that too very generic, what kind of project should be there, particularly the case study structure. Case study structure is a very debated topic actually. There is no standard structure, but there is a way where you can, how you can make a good study। मैं बताता हूँ। फर्स्ट थिंग, पोर्टफोलियो में कितने प्रोजेक्ट्स होने चाहिए। आई वुड से, अगर आपके पोर्टफोलियो में 3 प्रोजेक्ट हैं, तो आपका प्रोजेक्ट पोर्टफोलियो इनफ होता है। एक डेस्कटॉप डिजाइन का प्रोजेक्ट, राइट, एक आप डेस्कटॉप की वेबसाइट, आप या वेबसाइट या ऐप डिजाइन कर रहे हो, तो एक डेस्कटॉप डिजाइन का प्रोजेक्ट चाहिए। एक मोबाइल डिजाइन का प्रोजेक्ट चाहिए। उसमें भी यू शुड बी क्लियर कि आपने एंड्रॉइड के लिए डिजाइन किया है या iOS के लिए डिजाइन किया है। यू शुड अंडरस्टैंड, बिकॉज आई एम होपिंग दैट यू आर ऑलरेडी इन द फील्ड, यू हैव वन केस स्टडी, व्हिच मींस आप कर रहे हो पहले से। एंड्रॉइड एंड iOS के डिजाइन प्रिंसिपल्स डिफरेंट होते हैं। यू एज अ डिजाइनर शुड नो द डिफरेंस, कि क्या क्या जगहों पे 4 ही 5 8, मतलब 4 5 8 10 डिफरेंस होते हैं, बट मेंशन कि ये एक iOS ऐप है, एंड शो कि आपने कहां पर वो यूनिक पैटर्न्स जो iOS स्पेसिफिक होते हैं वो आपने इनकॉर्पोरेट किए हैं, ठीक है। तो डेस्कटॉप में ब्राउजर के हिसाब से आपको डिजाइन करना है। दूसरा प्रोजेक्ट होगा आपका
मोबाइल का, जिसपे आपको एंड्रॉइड एंड आईओएस के बीच का डिफरेंस बताना है एंड यूनिक पैटर्न्स जो आपने यूज किए हैं वो बताना है। थर्ड प्रोजेक्ट जो होता है, थर्ड प्रोजेक्ट में बहुत सारा स्कोप होता है आपके पास में। लेट्स सी आप डैशबोर्ड्स अच्छे बना पाते हो, एंड दैट डैशबोर्ड इज अ वेरी बिग पार्ट ऑफ द बी टू बी डिजाइन। ये जो आईबीएम, टीसीएस, इनमें भी यूएक्स डिजाइनर्स हायर हो रहे होते हैं अच्छी अच्छी सैलरीज पे, बट उनके प्रोजेक्ट्स बी टू बी होते हैं, विच मीन्स दे आर ऑल्सो डिजाइनिंग फॉर अदर बिजनेसेस। वो इंस्टाग्राम जैसा ऐप नहीं बना रहे होते, राइट, जो बी टू सी होता है, विच इज अ बिजनेस टू कस्टमर ऐप। वो बना रहे होते हैं कि पता चला, मान लो जैसे टीसीएस का कोई प्रोडक्ट है जो हॉटस्टार यूज कर रहा है, राइट, हॉटस्टार भी बिजनेस है, और टीसीएस ने कोई एनालिटिक्स का बहुत अच्छा सा प्रोडक्ट बना रखा है जिसको हॉटस्टार यूज कर रहा है, उसमें डैशबोर्ड बहुत ज्यादा होगा। तो अगर आपको उस तरह का डिजाइन पसंद है, आप एक डैशबोर्ड इंक्लूड कर सकते हो। लेट्स से आपको डिजाइन के साथ में, हिमांशु सैनी ने दर्द भरा क्वेश्चन पूछ लिया है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, मैं आ रहा हूँ वापस अभी। सो या तो थर्ड प्रोजेक्ट में आप डैशबोर्ड डाल सकते हो, आप अगर आप इलस्ट्रेशन जानते हो तो आप इलस्ट्रेशन डाल सकते हो, अगर आपको आफ्टर इफेक्ट्स आपने थोड़ा बहुत सीख ली है एंड आपको एनिमेशन इन मोशन करना आ गया है, आप वो डाल सकते हो। अगर आपने कोई छोटा सा आइकन का पैक डाला है तो आप डाल सकते हो आइकन का पैक। तो अपने थर्ड प्रोजेक्ट को आप अपने पोर्टफोलियो के एक्स फैक्टर की तरह चूज करो, कि एक डेस्कटॉप प्रोजेक्ट, एक मोबाइल प्रोजेक्ट, एंड जो थर्ड प्रोजेक्ट होगा वो एक्स फैक्टर होगा, वो होगा जो आपका यूनिक है, राइट। कि आपसे आगे चल करके कोई ये ना पूछे कि व्हाई शुड वी हायर यू। अगर आपसे कोई पूछता तो आप बोल दो ये जो मेरा थर्ड प्रोजेक्ट है ना, दैट इज द आंसर टू दैट क्वेश्चन, कि दिस इज व्हाई यू शुड हायर मी, बिकॉज आई हैव दैट एक्स फैक्टर अबाउट। ठीक है, ओके, अब मैं वापस से क्वेश्चन पे आ जाता हूँ। गाइस कीप पोस्टिंग योर क्वेश्चंस अगर और कुछ है तो। ओके, सो व्हाट इज द कॉम्पनसेशन रेंज ऑफ अ यूएक्स डिजाइनर आफ्टर 4 years of experience? Okay, Rahul, if you're still there, give me a hi. Or Rahul, I'm hoping you are there in the 94 people. So yeah, 4 साल के बाद में, if you are actually a good designer, like you have done good work, you have consistently grown, you can expect at the very least 15 to 25 LPA, like at the very least, because जो लोग आज 4 साल से हैं, उन वो लाइक 2018 में उन्होंने करियर शुरू किया होगा, उस वक्त में स्टार्टिंग सैलरी 15-20 लाख रुपए जैसे आज मिल सकती है, ऐसा नहीं होता था। तो दे स्टार्टेड ऑन अ लोअर रेंज, that is why they can expect to be at a senior designer level very easily, and they can expect anywhere between 15 to 25 or 30. That depends on the quality of their work. Okay, should we have a portfolio on Behance and Dribble? Behance, but first Notion, second WordPress website, third Behance. Okay, one pure case study. Yes, we answered that. Rahul is like, cool, I'll make a personal website. If anybody knows web development, ping me, I'll pay. Oh, ho, ho. How vulnerable are UX UI designers to layoffs or mass firing? So इससे कोई बचा नहीं हुआ है, everybody is equally vulnerable, right? What happens is जब mass layoffs हो रहे होते हैं तो they already have some kind of ranking, उन्हें पता है कि हमें किस ब्रैकेट में कितने लोग चाहिए। हर टीम में कुछ लीड डिजाइनर चाहिए, कुछ सीनियर डिजाइनर चाहिए, कुछ जूनियर डिजाइनर चाहिए। 10 लीड थे, 10 सीनियर थे, 10 जूनियर थे, तो हर जगह से 3-3 लोग जा रहे होंगे, हर जगह से 4-4 लोग जा रहे होंगे। You can only hope that you are never at the bottom of the pyramid. That depends on the kind of work that you have done there and the impact that you have left on the organization. जैसे ट्विटर वाले केस में कोई सेफ नहीं है, ठीक है, ट्विटर का सीईओ जब चला गया तो कोई सेफ नहीं है। You guys can connect on me, ठीक है। उसके बाद में yes, okay, कुश परमार, okay, so कुश, okay, I'll see your portfolio, ठीक है। चलो मैं एक बार फिर से डाल देता हूँ कि so because this session has a limit, but जिसको भी if you have more questions, I would prefer Instagram, but it's okay. Like Instagram, LinkedIn, कहीं पर भी आप डाल सकते हो. Anybody has any other question that you guys want to ask them? चलो 30 seconds, 30 seconds. If no question, then I'll wrap up. Guys, if you want, you can even unmute yourself. हाँ हाँ, मतलब like So I'm don't very need happy to listen chat to your box, voice. but you can even unmute yourself. Yeah. Himanshu, Kriti, can you please share some good portfolios? Okay, so Kriti. Acha, okay, let's do one thing. How many of you are
doing like some in some way you are doing UX design, UI UX. Any other way to connect with you except Insta? आप नंबर ले लेना मेरा ईशा से and drop me a message first. Don't just call me. It's okay. Or LinkedIn. You have my LinkedIn also. You have Yeah. yeah. So Kush Parmar is doing UX. Sandhya is also doing UX. ठीक है. You guys DM me in some of the platform. I'll try to help you out. ठीक है. Anybody here? Anybody else जो कि और अभी भी like you are already doing UX? Kriti, yes. Okay. Chalo. So we have Kriti, Sandhya, and Kush. Okay. Out of 94, three we already have 3 UX designers. अच्छा अच्छा लग रहा है मेरे को यार बहुत ठीक है चलो if you guys don't have any questions तो I'll wrap up here ठीक है चलो I liked it okay Naina Sharma is like 1 minute oh okay okay Let's do it 25 seconds है ना 1 minute तो ज़्यादा हो जाएगा but yeah ठीक है I'm hoping Nana has a very important question to ask. to contact. आप दिशा से ले लेना. Yeah. You guys can either text me on my Insta or somewhere or on my WhatsApp and I will share with you Rajat's contact if that would be needed. Otherwise, LinkedIn and Insta is always there to connect with him. Yeah. लाइक मैं पब्लिकली पोस्ट नहीं कर रहा हूँ ताकि कोई मिस कॉल मार मार के मेरे को परेशान नहीं करे हाँ बट मतलब आई एम ओके आई ऑलरेडी हैव सो मेनी स्टूडेंट्स हु कीप कॉलिंग मी तो आई एम ओके विद इफ यू हैव अ क्वेश्चन आई एम ओके चलो ठीक है आई थिंक वी आर रैपिंग अप हियर ठीक है नैना चलो नैना संध्या कृति एंड परमार वी विल सी यू yeah bro Mohit we have LinkedIn you guys can connect to Isha she'll give you the contacts ठीक है guys चलो bye bye hope that was helpful. Yeah. So thank you, Rajat, for joining. It was a great session, very interactive. This was kind of our best session, I guess, because there's a huge audience. We didn't expect this much of audience, but yeah, people joined after listening and they have referred